Hello friends, let's discuss first topic of section B that has appeared this year's essay paper. The topic is muddy water is best cleared by leaving it alone. So let's try to decode the keywords that are used. Now here the first set of keywords you should focus on is muddy water. Now it is a metaphor. It indicates confusion, agitation, chaos, disturbance. So you can put up many synonyms to expand the scope of the essay. So where is this confusion, agitation, chaos lies? You can attach it to mind, society, economy, IR, polity, and so on. So again, in this way you can expand the scope of the essay by focusing on keywords. Second keyword you should focus on is best cleared. So here this word implies clarity. Okay. Now cleared का मतलब और भी हो सकता है that correct, smooth, bring harmony, resolve issues, so forth. Next keyword is leaving it alone. So ये keywords हमें क्या बताते हैं? When you say leave it alone, means let it be, keep it still, don't intervene or interfere, and so on. So let's look at how you expand the meaning of the essay. Once you have these pointers, you will be able to link this number 1, okay, this number 2, and this number 3. When you let when you let certain things like 3, how they bring 2 and how they remove first. So इसको अगर हमें इंट्रोडक्शन में एक्सपांड करना है तो कैसे करेंगे? So ये जो कोट है ये यूनिवर्सल कैसे है, कहां से कैसे स्कोप है इसका? फ्रॉम इंडिविजुअल साइकोलॉजी टू गवर्नेंस, फ्रॉम डिप्लोमेसी टू सोशल रिफॉर्म्स. और इसमें आप क्या कहोगे? दैट पेशेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफन यील्ड बेटर आउटकम्स. सो जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं, ये सोल्यूशन, आउटकम, रिजल्ट, ये भी आप बोल सकते हो. ये कब आता है? समटाइम्स इट कम्स आउट ऑफ पेशेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस. ओके, अब ये जो कनेक्शन है ये किससे आप लगा सकते हो? व्हाट कुड बी थिंकर्स और फिलोसॉफी दैट यू कैन ब्रिंग इन? One could be Alan Watts' philosophy, where you see Eastern philosophy influence. Then Lao Tzu's Taoist wisdom can also be brought in. Then Indian philosophy of patience and detachment that we find in Bhagavad Gita, that can also be connected here. So in this way, you think of various examples that could be part of your essay. So you can begin with metaphor, muddy water. What does it symbolize? Okay, it symbolizes confusion, chaos, agitation, disturbed situation. कौन से भी sphere में हो. Then its meaning is just as stirring disturbed water worsens
द मडीनेस, ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्सनिंग मीन्स मेकिंग इट मोर मडी. In life too, overthinking. Now these keywords are going to help you further. Hasty interference or impulsive action. Impulsive means not which is thoughtful. Can worsen the problem. So if you want to solve the problem, let it be for some time. Don't interfere with it. That's the key message you want to explain while explaining the quote. Now, the question is, what could be your thesis statement or main idea around which your essay is going to revolve? The proverb suggests that many problems in life, so again you are taking scope of life and society, so this is second scope, resolve best not through forceful intervention, so isko nahi karna hai, but थ्रू पेशेंस. अब कीवर्ड्स देखो, पेशेंस को यूज करना है. नेचुरल प्रोग्रेशन, सो नेचुरली कुछ चीजें बदलते रहती है उससे. एंड अलाउिंग क्लैरिटी टू इमर्ज ओवर टाइम. सो क्लैरिटी, अगेन इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो. व्हाई डज क्लैरिटी नॉट इमर्ज इमीडिएटली और क्विकली. ये भी डायमेंशन आप एड्रेस कर सकते हो. अब इसमें आपको थेसिस में ही इसका कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करना है, सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इट इन कंक्लूजन और जस्ट बिफोर कंक्लूजन. yet indicates contradiction. This principle must be applied with prudence. For means because there are situations where action is indispensable. So this is counter argument. So आपको ये बैलेंस आउट करना है कि yes, it is true that some problems can be solved by using patience, calmness, quietness, but sometimes actions are also necessary. So this is a thesis statement. It gives an idea to the reader that how you are going to explain it or prove it in your main body. So let's go to main body. Okay, so first is psychological dimension. इनर क्लैरिटी थ्रू पेशेंस कैसे आती है एक्सप्लेन करने के लिए. सो वन इज एग्जाम्पल. ओके, यू कैन गिव फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट व्हेन एंग्री रिएक्टिंग इंस्टेंटली ऑफन कॉजेस रिग्रेट, because in anger you lose an ability to think rationally, you get overwhelmed by your emotions, you get self hypnotized. So ये सब आप लिख सकते हो. Calmness with time, so when you remain calm and when you wait, it leads to balanced response, because by that time there is a clarity about the real issue or real causes of the issue and you can act on issue. So haste should be avoided. This is one dimension. मॉडर्न साइकोलॉजी भी क्या कहती है? ओवर थिंकिंग एंड रुमिनेशन वर्सन्स एंजाइटी. सो इसमें आप एंजाइटी का भी डायमेंशन ला रहे हो. अगर आप ज्यादा सोचते हो तो आप ज्यादा वरी करते हो, सो वो भी ज्यादा सोचना ठीक नहीं है. ठीक है. माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन इज नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू लेट योर विजडम फ्लो. सो लेटिंग इट बी, ये जो है ना, ये वहां से आता है. सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैन बी एन एंटीडोट to the anxiety. So ये भी modern psychology ने prove किया है. Now in therapy also they allow subconscious processes to act on their own, so without forcefully seeking the answer. So let time heal, ये जो saying है, it aptly applies here. Okay, so this is how you highlight psychological dimensions. Now governance में ये कैसे दिखाई देता है? Governance diplomacy में. So एक होगा Cuban Missile Crisis, where patience on both the parts, particularly Kennedy's patience, led to avoidance of aggression and immediate reaction. ये भी आप कह सकते हो. Okay, so strategic patience जिसको कहते हैं. So बहुत बार आपने IR में देखा होगा that when the situation becomes volatile, the people, the statesmen don't make hasty decision. Rather, they believe in dialogue, they believe in negotiation. You can see it in Doklam case also. Okay. Then Gandhi's non-violent resistance was also connected to this. Okay, he avoided violence because that was a very hasty decision. Retaliation was avoided. So through his non-violence technique, people around him could get the clarity of his philosophical message. ये भी आप कह सकते हो. इसका कॉन्ट्रास्ट ये है कि ओवर रिएक्शन जब हो जाता है किसी भी चीज में, लेट्स से गवर्नेंस में, सो इट से अनरेस्ट बढ़ सकता है.
Okay, so have you seen cases where government tries to protest, suppress the protest or jail the opponent? It backfires. So वहां आपको क्या करना है? Even if there is opposition to policy, let there be some silence, calmness, so that people can get clarity about your intention behind the policy. So governance में भी ये आप explain कर सकते हो. सोशल रिफॉर्म में कुछ चीजें आपको पर्टिकुलरली हाईलाइट करनी है. जैसे देखो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अटेम्प्टेड थ्रू वेरियस मूवमेंट्स, लाइक अंबेडकर डिड इट, बट हैज इट रियली बी गॉन? नो, बिकॉज इट टेक्स टाइम. Okay, to change attitudes over a period of time, it requires time. So sometimes you have to let things be and let people understand over a period of time through education, awareness, campaigning, that it is necessary. Okay, women empowerment also. What does it indicate? Women empowerment, that laws alone are not sufficient. Okay, unless people or cultural attitudes are changed towards women, real empowerment will not happen. And there are plenty examples you can incorporate here. Okay. Then force social change, जो बहुत बार गवर्नमेंट लाना चाहती है, जैसे प्रोहिबिशन इन द यूएस वर्सन क्राइम इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग मोरल्स. ये भी हो सकता है. whenever you ban something, say कुछ स्टेट है हमारे यहाँ जहां लिकर बैन किया है, but has it stopped people from consuming liquor? No. So again, forced social change is sometimes counterproductive. आर्ग्यूमेंट आप में ये ला सकते हो, दैट अलाउिंग अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कल्चर टू सेटल नेचुरली क्लियर्स मर्डीनेस. सो आपको थोड़ा पेशेंट होना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है, एजुकेशन पे एम्फेसिस देना है, एंड लेट कल्चर टू सेटल ऑन इट्स ओन. सो इसमें आप एक कोड भी यूज कर सकते हो, दैट परसुएशन इज ऑफन बेटर देन कंपल्शन. सो परसुएशन में हम लोगों को थोड़ा वक्त देते हैं टू थिंक ऑन देयर ओन. फिलोसॉफिकल कनेक्शन क्या लगा सकते हो? एक तो हमने पहले कहा था, ताओइज्म बिलीव्स इन इट, दैट एफर्टलेस एक्शन, नॉट फोर्सिंग आउटकम, हार्मनी कम्स नेचुरली. ये जो ताओइस्ट फिलोसॉफी है, ये भी आप लिंक कर सकते हो. इंडियन फिलोसॉफी में भगवत गीता है जो आपको कहता है कि डिटैच एंगेजमेंट और एक्ट विदाउट एंगेजमेंट. ओके, क्योंकि इससे क्या होता है, यू डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर हियर एंड देयर, यू बिलीव इन एफर्ट्स एंड यू लेट रिजल्ट फ्लो आउट ऑफ योर एफर्ट्स. बुद्धिज्म भी वही कहता है, दैट डेवलप इक्वानिमिटी, ओके, बिकॉज देयर इज impermanence, emotions and problems settle when not clung to. So again, it helps you to see the things in right perspective and let them be, rather than forcefully interfering in their way of life. तो ये भी बुद्धिज्म आपको सिखाता है. इसमें आप मिडल पाथ का भी फिलोसॉफी ला सकते हो. डोंट गो फॉर एक्सट्रीम्स. अब प्रैक्टिकल डायमेंशन देखो, ठीक है. रिलेशनशिप में भी बहुत बार झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं. सो इमीडिएट रिएक्शंस आर काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज दे मे नॉट बी इंटरप्रिटेड राइटली. सो व्हाट इज नीडेड इज गिविंग टाइम टू हील. सेकेंड, वर्कप्लेस में भी, ओके, लीडर्स हु डोंट माइक्रो मैनेज देयर सबऑर्डिनेट्स, they let their subordinates to show the creativity, to work with a little bit freedom. Parenting में भी होना चाहिए, that if you over control your children, their natural growth is hampered. So sometimes allowing them a limited or circumscribed freedom works better. Personal growth may be, confusion about career choices often gets cleared when you are allowed to think instead of making rush decision. क्योंकि बहुत बार जब हम rush में decision लेते हैं, they don't turn out to be good. So important event जो life में है, career, marriage, personal relationship, parenting, इसके लिए थोड़ा patience चाहिए. ये hasty decisions जो अगर होते हैं, they worsen the situation more. अब काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, जो हमने पहले ही थेसिस स्टेटमेंट देखा था, that yes, whenever there is injustice in operation, silence worsens the situation. People assume that you are okay with the injustice and they do it more. So वहां एक्शन लेना है. Emergencies में भी you cannot wait. Okay, in crisis, swift action is necessary. Waiting is harmful. So, for example, someone is having heart attack or some natural disasters have happened. So you cannot
say that let situation be and things will be normal on their own. No, they will worsen. So वहां भी एक्शन नेसेसरी है. सिस्टमिक इश्यूज भी जहां होते हैं, जैसे करप्शन, क्लाइमेट चेंज या एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन, ये बहुत बार कंप्लीटली साइलेंस से या कामनेस से नहीं सॉल्व होगा. उसके लिए हमें थोड़े थोड़े तो इंटरवेंशन करने ही चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम. पर्सनल स्टैग्नेंसी में भी बहुत बार we get anxious about our own growth trajectory, career or achievement in life, and sometimes we end up making hasty decision. लेकिन वो hasty decision and indecision both are wrong. What is needed is counseling or seeking guidance, and now that is active intervention. So ये कुछ counter argument हो सकते हैं जहां आप कह सकते हो कि letting things be as they are is sometimes not good. Okay, but इसका rebuttal भी देना है आपको. सो रिबटल क्या हो सकता है? पहला रिबटल देखो, द प्रोवर्ब डज नॉट एडवोकेट पैसिविटी. सो ये जो प्रोवर्ब है, लेट थिंग्स एज दे आर एंड दे विल गेट बेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नॉट पैसिविटी बट वाइज डिस्कर्नमेंट. Discernment means to be able to differentiate between two things. What are the two things? One is know when action worsens muddiness, this one, and when action is unavoidable. इन दोनों चीजों में हमें डिफरेंशिएट करना है और हमें कहाँ कोर्ट का अप्रोच अडॉप्ट करना है इस फर्स्ट में, कि जहां आपका एक्शन चीजों को और भी बिगाड़ सकता है, वहां ये कोर्ट कहता है कि आप इंटरवेन मत करो, बी पेशेंट. लेकिन ये जो सेकंड है, वेयर एक्शन इज अनअवॉइडेबल, वहां ये कोर्ट एप्लीकेबल नहीं. सो यू आर पॉइंटिंग आउट द स्कोप ऑफ द कोर्ट. Second rebuttal is leaving it alone is not permanent withdrawal. So court is not asking you to let it be forever. So it is not permanent withdrawal but temporary restraint. और ये कब तक? Until clarity emerges. So ये important है. कोर्ट में क्लैरिटी का implication है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक आपको थोड़ा सा एक्शन नहीं लेना है. But as soon as you have a clarity, you can act on it. Third rebuttal is, even in crisis, calm action after an initial pause often yields better results than panic driven. So, calm action versus panic driven response, ये जो है इसका डिफरेंस आपको बताना है. That even in emergency, of course, there is a need to act immediately. That doesn't mean you should get panicked and then act. Rather, keep calm, focus on essential thing, and then provide the solution. ये भी आप कह सकते हो. And finally, thus the proverb complements action by teaching timing and restraint, not absolute inaction. ये आपको अल्टीमेटली बताना है कि ये जो प्रोवर्ब है ये आपको क्या सिखाता है, that timing is important and restraints are also sometimes important to deliver an effective solution. So ये कुछ रिबटल हो सकते हैं. रिबटल देने के बाद क्या होता है कि आप इस ऐसे का लूप क्लोज कर रहे हो. You are balancing out the arguments. Now कुछ रिलेवेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे ये हमने पहले ही लिया है ताओइज्म का. सेकंड, बुद्धा साइलेंस, और ये स्टोरी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. व्हेन अ डिसाइपल आस्क्ड Buddha metaphysical question, he stayed silent instead of forcing an answer, showing that clarity arises when agitation is allowed to settle. So ये जो स्टोरी है ये भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. स्टोइक फिलॉसफी भी है जहां मार्कस ऑरेलियस टॉक्स अबाउट many problems solved themselves if one controls one's reaction instead of interfering. ये जो स्टोइक का दो कीवर्ड बताते हैं, सस्टेन एंड रिस्ट्रेन, इसको भी आप इसमें ले सकते हो. देन कंक्लूजन में क्या करोगे? यू फर्स्ट रिपीट what you have said in other words. Okay, just as muddy water clears with stillness, human problems, social conflict and even global crisis often require patience and restraint. ये rephrase करके आपने जो पहले शुरुआत में कहा था वही रिपीट कर रहे हो. बैलेंस आउट कैसे करोगे? While there are moments, so while indicates contradiction, you want to highlight two sides. While there are moments where urgency is necessary, wisdom lies in discerning when to step back and let natural clarity emerge. So you are highlighting both the things. Yes, sometimes action is necessary in urgency, but wisdom कहाँ लाता है? जब आपको डिस्कर्न करना है कि कहाँ एक्शन इमीडिएट लेना है और कहाँ आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोच के फिर बाद में एक्ट करना है. Then you can give a philosophical closure here. What is that?
कीवर्ड्स अगर जो हमने पहले यूज किए थे, पेशेंस, डिटैचमेंट एंड ट्रस्ट इन द नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग रिवील क्लैरिटी बियॉन्ड व्हाट रेस्टलेस एजिटेशन कैन अचीव। सो यहां हम बहुत बार ये कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब क्या है? वेट, लेट आउटकम्स कम नेचुरली, डोंट बी हेस्टी। सो ये फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन आप दे सकते हो, एंड यू कैन यूज कोट like this: to do nothing is sometimes the best action, for in stillness the truth reveals itself, है ना। या आपने कुंग फू पांडा का अगर पहला पार्ट देखा है तो उसमें भी वो मास्टर उगवे का जो कोट है वो भी आप यहां दे सकते हो, ठीक है। कुछ और भी कोट आपके लिए यूजफुल रहेंगे, जैसे ये लाओ ज़ू का कोट देखो, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। सो नेचुरलिज्म के नजदीक जाने वाला कोट है, ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो। एरिस्टोटल का ये कोट भी बहुत रिलेवेंट है, दैट पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सो ये जहां पेशेंस कीवर्ड आता है उसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दिस कोट सर्व्स द पर्पस। The nearer a man comes to a calm mind, the closer he is to strength. So Stoics talk about mental strength, and mental strength lies in a calm mind, because calming a mind is not an easy task. But when the mind is calm, you get clarity about who you are, what are your strengths, what are your weaknesses, what are your belief system, what are your assumptions, and you can critically evaluate that. So even Socrates said that know yourself, that is the beginning of wisdom. But in order to know yourself, you need to have a very calm and focused mind. When your mind is agitated, it will not be able to perceive yourself correctly. Your ego will get distorted and it will not be healthy ego, right? So guys देखो, ये जो philosophical topic है, ये आपका क्या चेक कर रहा है? that ये आपका एक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, हैव यू रियली अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ हैविंग अ काम माइंड, particularly in a situation where we are overwhelmed with different influences through social media. So end में आप इस टॉपिक का रिलेवेंस भी बता सकते हो, that how this topic is relevant today, especially when we are living in a digital world. ठीक है, so let's take liberty here to think creatively from different dimensions point of view, but again make sure that whatever point you write, sound them as relevant as possible. उनको disconnected ऐसे नहीं लगना चाहिए वो आपका explanation, ठीक है। That is the final key point you have to keep in mind, because this essay has a wider scope. जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि हर एक कीवर्ड्स को, फ्रेजेस को आप वाइडली इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन इतना भी वाइडर नहीं होना चाहिए कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो टॉपिक से बहुत दूर जा रहा है, बिकॉज दैट विल रिड्यूस योर स्कोर। All right. So thanks a lot. Let me know your queries about the topic by commenting at the end in the comment section of the YouTube or whatever platform that you are watching on. We will try to respond. Thank you. Thanks a lot.